Hello, good evening, friends. So we are going with the exercise 2.1 itself. Okay, कल मैंने homeworks दिया था. Yeah, many of you have submitted it. Almost everyone has submitted it. Only one or two are left to submit. Okay, now listen very carefully. I'll ask them. Those who are not able to submit, why? What was the reason? Okay. Now, first question. Everything was solved. Okay. Now the write the coefficient of x square in each of the following. X square यहाँ का इसके सामने 1 है. That is already said. यहाँ पर x square के बाजू में in this x square के बाजू में -1 है. So coefficient of x square is -1. So you have to just write coefficient of x square is equal to -1. Then you are having x square के बाजू में क्या है? यहाँ पर x square के बाजू में क्या है? Pi upon 2. So here the answer is pi upon 2. यहाँ पर already discussed है. यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 0. Okay. Now give one example. Already done. राइट द डिक्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. इसके अंदर देखो डिक्रीज लिखना है. ओके, सो डिग्री कितना है? डिग्री आपको डायरेक्ट लिखना है कि यहाँ पर देखो मैक्सिमम कितना है? 3 है. सो यू हैव टू राइट व्हाट डिग्री इज 3. 3 ओनली यू नीड टू राइट. नो नीड ऑफ राइटिंग x क्यूब और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज यहाँ पर कितना है? y स्क्वायर है. y स्क्वायर है. सो यहाँ पर 2 है डिग्री. यहाँ पर t raised to 1, so 1 is the degree. और यहाँ पर 3 है x raised to 0, so degree is what? 0. So that is how you are needed to write. Now linear cubic, already we discussed it. Again I'm just telling. Okay, now classify the following in the quadratic equation as linear, quadratic, cubic, polynomial. Okay, एक बार revision के लिए x square plus x square, so it is square term highest, so quadratic. X minus x cube is more prominent here, more highest, so it is a cubic. Then y plus y square plus 4, so it is square, so it is quadratic. 1 plus x raised to 1 है, highest x raised to 1 है, तो ये क्या होएगा? Linear. 3 raised to 3t, so t raised to 1, so this is also what? Linear. r square है, 2 है, तो क्या हो जाएगा? Quadratic. x cube, so क्या हो जाएगा? Cubic. So that is the answer. You have to write the whole thing: quadratic, cubic, quadratic, and in that manner, linear and all that. Okay, so we'll go into the next topic. See, our next topic is zeros of polynomial. Okay, before going into zeros of a polynomial, what is a zero of a polynomial? We'll go into finding out some examples. Okay, find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables. Now look here, we'll go into that and then we'll go slowly into what it is meaning and all. Okay, now look here, we can see p of x is equal to 5x square minus 3x plus 7 at x is equal to 1. Okay, what is the meaning of this? Find the value. Okay, I'm doing it here itself. So you have to find out the value when x is equal to 1. x is equal to 1 आपको find out करना है. ये है p of x. p of x यानी आपका फंक्शन होता है. Okay, p of x is known as a function. यहाँ पर फंक्शन है आपका 5x square minus 3x plus 7. Okay, now p of 1 करना है. p of 1 करना है. So यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर जहां भी x है, x के यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी x के जगह आपने क्या किया है? 1 किया है. तो 1 जहां भी अभी x है उधर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा? 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा. So that is 5 into x की जगह क्या लिखेंगे? 1 the whole square. x था, x की जगह 1 लिख दिया, माइनस 3 into x की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे because the function is 1 plus 7. Now 5 into 1 square कितना होता है? 1 the whole square is what? 1 itself. So it is remaining 5 into 1. 5 into 1 is 5 itself. 3 into 1 is 3 plus 7. Okay, अब addition कर लो, जो add करना हो वो दोनों add को add कर लो. 5 plus 7 is how much? 12. 12 minus 3. 12 minus 3 is how much? It is 9. So p of one value, so value of each one indicate value. So x जब one value दे रहे हैं, when you are giving x value as 1, you are getting what? The function's value. The p of x value is how much? It is 9. So 9 is the answer here. Exactly this thing. In the same way, if we
Okay, the same with the second one, q of y equal to 3y cube 3y cube minus 4y plus रूट 11 प्लस रूट 11। अब क्या देना है, y का वैल्यू आपको कितना देना है, 2 देना है। ओके, सी हियर y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 2 देना है, तो q into 2। ओके, सो 3 into 2 the whole cube minus 4 into 2 plus root 11। okay, square root 11। now look here, 3 into 2 cube, 2 cube यानी क्या होता है, that you have to understand first। 2 cube यानी 2 into 2 into 2, that is 2 cube। okay, 3 times 2, that is 2 cube। so 2 2s are कितना होता है, 4, very good, 4 2s are 8, वेरी गुड। सो आपको कितना मिल गया, 2 क्यूब के जगह कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। सो 3 into 8 minus 4 2s are डायरेक्टली आई एम राइटिंग इट, कितना आएगा, 4 2s कितना होता है, yes it is 8 plus root 11। now 3 8s are कितना होता है, 24, 24 minus 8 plus root 11। okay, now what is 24 minus 8, 24 minus 8 is how much, 16, 16 plus root 11, that is the answer। is that clear, this thing? So that is how you are finding out the values when your value is given, uske corresponding value aapko mil raha hai। okay, now the third one you can do it yourself now। okay, going into the next। okay, इसमें अगर मैं दूसरा एक टाइप, एक मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं। okay, now p of x is equal to x plus 2। okay, p of x is equal to x plus 2। मैं अभी ये p of 2 वैल्यू दे रहा हूँ। okay, मैं x का वैल्यू क्या दे रहा हूँ, x is equal to 2, तो p of 2 वैल्यू दे रहा हूँ। सो यहाँ पर भी x के जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो 2 plus 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। okay, नाउ मैं x का वैल्यू मैं -2 दे रहा हूँ। okay, आई एम गिविंग -2। now p of -2, p of -2 is equal to, अभी x के जगह मैं क्या दूंगा, -2 दूंगा, -2 plus 2। okay, now -2 plus 2 क्या होएगा, it will be what, cancelled। okay, -2 plus 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी मैं x का वैल्यू ऐसे डालू जिससे मेरा आंसर 0 मिले, ओके, दैट इज नोन एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जो भी मैं वैल्यू x के जगह सब्स्टिट्यूट करूं और उसके अंदर मेरे को रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिले, ओके, 0 मिले, देन दैट इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर, दिस थिंग? नॉर्मल कोई भी वैल्यू डाले तो यू आर गेटिंग एनी न्यूमेरिकल, इट कैन बी प्लस और माइनस और एनीथिंग लाइक दैट। अगर उसके अंदर वैल्यू मेरे को 0 मिले, देन दैट इज नोन एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। Is that clear, this thing? Okay, now we'll go into the exercise example ही देख लेते हैं। check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2। okay, just आपने अभी देखा था यहाँ पर, जब 2 x is equal to 2 is not a zero, x is equal to -2 is a zero, ऐसे आपको लिखना होगा उसके अंदर। okay, so therefore यहाँ पर लिखा हुआ है -2 is a zero of the polynomial। look here, it is specifically written -2 is a zero of a polynomial and x plus 2 but of x plus 2, but 2 is not, plus 2 नहीं है but -2 है। okay, now find a zero, find अभी zeros find out करने के लिए। okay, now that the next thing, zeros find out करने के लिए, let's look into that itself। okay, now मेरे को यहाँ पर जीरो फाइंड आउट करना है। ओके, ये आपको पता है कि 0 -2 है। ऐसे ही अगर मेरे को जीरो फाइंड आउट करना है, अभी मेरे को पता है कि p of x मेरा क्या है, x plus 2, x plus 2 is my 0। okay, now I have to equate p of x is equal to 0 करना है। p of x इक्वेट करना है किससे, 0 से। तो x plus 2 को इक्वेट करो 0 से। यहाँ पर x plus 2 है, p of x की जगह मैंने क्या लिख दिया, x plus 2, x plus 2 equal to 0 कर दिया। okay, now x is equal to plus 2 बाजू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, -2 इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, प्लस टू उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2। होप यू नो दिस रूल। अगर रूल नहीं पता तो मैं एक बार समझा देता हूँ। x plus 2 equal to 0, so plus 2 इक्वल साइन के राइट साइड में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, x is equal to -2। now x minus 5 equal to 0,
ओके। नाउ x इक्वल टू -5 राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ओके, सो आपके ये नंबर्स जो होता है इक्वल साइन के राइट साइड में जाए या इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में जाए, ओके, उस टाइम में आपको साइन को क्या करना है, चेंज करना है। प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, और यहां से भी उल्टा जाएगा, तो प्लस है तो यहाँ पर बाजू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर माइनस है तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ओके, सो आई एम रिवाइजिंग द जीरोस वन मोर टाइम। अभी p ऑफ x आपको x+2 दिया हुआ है, तो p ऑफ x को इक्वेट करो 0 से। सो x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, सो -2 है आपका 0। In the same way, one more example, if I take it, if I'm taking p of x is equal to 2x minus 3, 2x minus 3, मेरे को इसका zeros find out करना है, zeros I want to find out. So क्या करना होगा, first step क्या होगा, take another pen now, yeah, p of x को करो इक्वेट करो 0 से। ओके, अभी आपका p of x क्या है, 2x minus 3 equal to 0, 2x minus 3 equal to 0. Now 2x is equal to -3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट रूल, अगर मल्टीप्लाई, अभी माइनस हो तो प्लस होता है, प्लस हो तो माइनस होता है। अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या होगा, डिविजन होगा। अगर डिविजन हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। So now here 2 into x, 2 into x is what, multiplication it is happening. अगर मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन होएगा, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। सो x is equal to 3/2, that is the answer. Okay, so इसका x का वैल्यू क्या होएगा, 3/2, so 0 is what, 3/2. If you want to verify this, okay, अगर आपका ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है, वेरीफाई करना है। okay, you can also verify it. आपका पता है कि p of x आपका क्या है, 2x minus 3 है। आपको 0 भी कितना मिला है, p of 3/2, 3/2 मिला है। सो यहाँ पर अभी 2 इंटू एक्स के जगह भी क्या वैल्यू दूंगा मैं, 3/2, सो 3/2 मैं लिख रहा हूं -3। अभी ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 3 minus 3, 3 minus 3 equal to क्या होएगा, 0. See exactly this thing. So if you are substituting the 0 in the equation, you will get the remainder as what, 0 itself. That is the thing. Okay, so पहले आपको zeros find out करना है, तो जो भी equation है उसको 0 के साथ equate करो। Okay, then that equating it with, and you are getting an x value आपको मिल गया। अगर उसको verify करना है, if you want to verify, okay, वेरीफाई करना है तो आपको p of 3/2, x के जगह ये जो 0 मिला है वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, एंड देन डू द रिमेनिंग 2 into 3/2 minus 3, and you are getting the zeros. Is that clear this much? Okay, now see this portion, the zeros, finding out zeros and what is 0 is very important. Now find a 0 of the polynomial 2x plus 1. अभी देखो 2x plus 1 का 0 find out करना है। Now tell me, p of x इक्वल टू 2x plus 1, और आपको फाइंड आउट करना है 2x plus 1 का 0। सो p of x इक्वल टू 0 कर दो। अभी यहाँ पर 2x plus 1 इक्वल टू 0। ओके, अभी 2x इज इक्वल टू +1 बाजू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। 2x नाउ सॉरी, अभी यहाँ पर 2 into x है, 2 into x है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। So -1/2. So that our zero value is what, x का वैल्यू क्या होएगा, -1/2. Is that clear this thing? Okay, now we'll look in the answer. Find the 0. So 0, so see here, x is equal to -1/2. That is how it has been done. Okay, now in the same way verify whether 2 and zeros are zeros of the polynomial x square minus 2x. Okay, same way आपको substitute करना है। Now sorry, okay, now find the value of the polynomial. Okay, polynomial आपको find out करना है जब x का वैल्यू 0 हो, -1 हो, तो अभी यहाँ पर क्या करना है, p of x, आई एम जस्ट टेलिंग वन मोर टाइम, p of x is equal to 5x minus 4x square plus 3.
अभी x के जगह आपको वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0 सब्स्टिट्यूट करना है. सो p ऑफ 0 सब्स्टिट्यूट करो. सो x के जगह जहां भी है, x के जगह जो भी वैल्यू है उसको आपको क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 0 सब्स्टिट्यूट करना है. सो 5 into 0 minus 4 into 0 the whole square plus 3. And in the same way, what 5 into 0 is what, 0, minus 4 into 0, 0 square is what, 0, 4 into 0 is what, 0, plus 3. So यहाँ पर आंसर क्या होएगा, 3. Is that clear this thing? In the same way, अभी आपको p of -1 find out करना है और p of 2 find out करना है यहाँ पर. Okay, this much you are needed to do. Now in the same way, अभी next question में, first question में देखो, second question में first one, p of 0, p of 1, p of 2, ये तीनों आपको फाइंड आउट करना है. दैट इज पहले आपको ये इक्वेशन लिखना है, फिर p of 0 फाइंड आउट करना है, 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद, फिर उसके बाद p of 1 फाइंड आउट करना है, 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, फिर उसके बाद 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, द रेस्ट ऑफ द थिंग. Okay, so that is how you are needed to do this thing. Okay, now after that, the next step, third question, we'll discuss this answers. Better you do it first yourself. Okay, that is more good. I'll keep a doubts batch if you are having doubts in this section now. In this, though, ye two exercise, the first and the second exercise, whichever doubts is there, will clear it out in the doubt section together. Okay, so keep your doubts marked. If you are having any doubts, just mark and keep it, and write down what is your doubt also, so you will remember when you are going to ask me. Okay, now verify whether the following are the zero polynomials are in zeros of the polynomial, indicate against them. Okay, so आपको यहाँ पर p of x भी दिया हुआ है. Okay, p of x दिया हुआ है और x का वैल्यू भी दिया हुआ है. अगर ये x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो और आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, देन इट इज अ zeros. अगर 0 नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो इट इज नॉट अ zero. I will do the first one. Okay, p of x is equal to 3x plus 1. p of x is equal to 3x plus 1. अभी नेक्स्ट क्या है, आपको देखो x का वैल्यू कितना बोला हुआ है, -1/3 इक्वल टू 3 इंटू, अभी x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, -1/3 प्लस 1. अभी ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या, -1 प्लस 1. ओके, -1 प्लस 1 कितना होता है, 0. So we can say that what x is equal to -3 is a 0 of the polynomial. Okay, is a 0 of the polynomial. Is that clear, this thing? Okay, so in the same manner you have to find out the values of each of the 8 question. Okay, so sometimes it will be remainder will be 0, sometimes the remainder will not be 0. So clear it out. Okay, and I'll tell the answer later on, but you are required to do it now. Then next is find the zeros of the following case. Okay, following cases का आपको zeros find out करना है. The same way as we did earlier, zeros find out करना है. So आपको p of x is equal to x plus 5. Okay, आपको zeros find out करना है, तो p of x को किससे equate करना है, 0 से equate करना है. So x plus 5 equal to 0. x is equal to क्या होएगा, -5. प्लस 5 बाजू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5. In the same way you are required to do all this sum और उसका zeros find out करना है. यहाँ पर देखो एक ax sum है, I can say this ax है. अभी इसको p of x equal to 0 करो. Okay, p of x की जगह क्या है, ax है, ax is equal to 0. अभी x is equal to multiplication है तो division हो जाएगा, so 0 upon a, 0 upon a, 0 upon a, 0 into anything is what, 0 itself. So x is equal to 0. यहाँ पर x का वैल्यू कितना होएगा, 0 होएगा. Okay, is that clear? So in this method you are needed to do the second exercise. It's also bit easy. Okay, the remaining next exercise onwards it will be little more little more easier, not can we say, or complicated also you can say, but it's very important for the next year. Okay, so do this much and let me know whatever doubt is there. Okay, thank you very much. We'll meet in the next class. Okay, yes, God bless you.